me record this session. All right. Basically, in French, we have IR ending verbs, right? Is it clear to you? सर बोर्ड विजिबल नहीं है अभी. Okay, it's not visible to you? No problem. Let me share the whiteboard. Is it visible to you? राइट सर. So in French, we have IR ending verbs, right? We have IR ending verbs. So you have to, because you know, in French, we have three type of verbs, ending from ER, ending from IR, and ending from RE. RE. Right? Now today I will राइट सर. explain to you because IR ending verb is very important in order to increase your vocab. Say clair. So now क्लियर सर. please, we have verb abolir. We have the verb abolir. Abolir is my verb Aboli. abolish. Yeah, Premo. Abolish. Okay. We have Abolish. verb accomplish. Repte Premo. Accomplish. Complete. The verb to Complete. accomplish. So these are the Accomplish. vocabularies which is very important. Accomplish. So Accomplish. abolir, accomplir, agir. You know, Agir. are the very important vocab. Now, abolir. Repte après moi. Abolir. Abolir is my verb. Accomplish. Abolir is my verb to abolish. Abolish. Okay. Abolir. Okay. Now, repte après moi. Agrandir. Repte après moi. Agrandir. ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज है. Agrandir. Agrandir. Agrandir is my verb to increase करना, enlarge करना. Yes, Agrandir. the Enlarge moment करना. the moment you use your the sujet, जो अपना theme, whenever you choose the sujet, you pick the theme, right? So the moment you pick the theme, you choose the sujet, you you on that case you basically required to use these type of vocabularies because you stuck somewhere. Why? Because you do not have the vocabularies. So these are the Right, sir. very important ironing verbs. Abolir is to abolish. Accomplish is Abolir. to accomplish is to accomplish. Okay. Agir Accomplish. is to act. Agrandir. रेपते आपने मुआ. Agrandir. इसका practice करना है आपको. Agrandir. Agrandir is to enlarge, to increase. Agrandir. Agrandir. Declare. Now, avertir. Clair. रेपते आपने मुआ. Avertir is my verb to warn करना. Avertir. Warn. Avertir. Yes. To warn. Now, because we are doing the ironing verb formulas, right? So, for example, your verb abolir, okay? And Abolir. abolir is my verb to abolish. Abolish. Declare. Abolir. Now, Clair, what sir. formula Abolir. of ironing verb? Are we practice करना proper? Anup, you there? Yes, I'm there. Okay. So today we are doing ironing verbs because the moment you speak the language, you use because you need your techniques and your vocab also, right? Correct. So agrandir is to increase, to stretch, to stretch. Agrandir to increase, to Agrandir. lengthen. Agir is to act. Accomplish to accomplish, पूरा करना. Abolir is to abolish. So what is the formula of ironing verb? Now repeat after. IS. IS, IS. IT. ISSONS, IISONS. ISSEZ, ISSEZENT. Tetrabia. तो आप क्या बनाओगे? Abolir को Jaboli, because we have to remove Jaboli. IR, so we have to use Jaboli. Jabolir. Q aboli, say clair. Chu abolir. Il el aboli, we have
IT, El abolir, abolir. nous abolissons, nous Nous abolissons, abolissons. nous Nous abolissons. nous abolissons, Nous abolissons. vous Vous abolissez, abolissez. vous abolissez, Vous abolissez. Elle abolit. elles abolissent. C'est clair. Elles abolissent. C'est clair. Conjugation, you will do it yourself because this is ironing verb, you know, is, it, and issons, issez, and isent. But Right, sir. you have to understand, because if you do not have the vocabulary, it would be hard to understand the language and to speak the language. So you will say warn, avertir, and avertir verb to warn, you know, avertir. Okay, this is avertir. This is a verb when you use and to want something. Batir. Repte après moi. Batir. Batir is my Bharti. verb to build. Build. Bharti. Batir. Batir. If we have a chapeau, circumflex line है जो हमारा ऐसा हो ना, ए chapeau लगती है, Eh, तो आ, क्योंकि a, it is a, that is for e, but yes, a is a only. Batir. Batir is to build. Batir is to Bharti is to build. Batir is to build. Build. Clear. Clear, sir. Now we have verb benir. E we have a ague. Benir is to किसको bless करना. So ये पता होना चाहिए Benir. आपको फ्रेंच में. Benir. Benir. Bless. Blanchir. Bless. Speak up. Blanchir. Blanchir Blanchir. is to whiten, to lighten the process. To lighten. You know, to whiten, to Blanchir. lighten. To lighten. Okay. To Lighten. lighten Lighten. and to lighten. Blanchir. Choisir. Répétez Blanchir. après moi. Choisir is to choose. Choisir. C'est clair. Convertir. Répétez après moi. Convertir. Convertir. Convertir is to convert करना. आपको अगर ये चीजें पता है फ्रेंच में, you can speak. Définir. Répétez après moi. Définir. Is to define. Définir. Yes, you define yourself. C'est clair. Définir. Speak Clair, up. sir. Établir. Répétez après moi. Établir is to establish. Établir. Yes, établir is to establish. Étourdir. Établir. Étourdir. Étourdir Étourdir. is to stun रह जाना. Stun. Étourdir. Stun. Étourdir. Run. To stun. So étourdir. If we have a ague. Now are we? étourdir को conjugate करो. Conjugate étourdi. आप बोलो कि मैं हैरान हो गया. Okay, मैं हैरान था. Étourdir conjugation. J'étourdir. Étourdi. Very good. J'étourdi. Very good. J'étourdir. Tu étourdi. Tu étourdi. तो क्या होगा? Je étourdi. ETOURDIS. Tu étourdi. ETOURDIS. Elle étourdi. Then DIT ending. Nous étourdissons. ISSONS ending. ISS. Yes. EZ. Yes, exactement. Vous étourdissez and elles étourdissent. 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 Say clair because we have ISS ENT ending. Say clair. Yes, sir. Clair, Say sir. clair. Okay. Now, maintenant. Répétez après moi. Étourdir. Répétez après moi. Étourdir. Définir. Étourdir. Définir is my verb to define. C'est clair. Finir. Définir. Répétez après moi. Finir. Finir is my verb to finish. Finir. Finir. Finir.
Franchise. finish, Speak up, please. franchise, Franchise. Franchise is my franchise, verb. Very important verb. Franchise. Franchise is my verb to franchise, clear. To clear to कर clear, देना. Yes. To franchise, clear an obstacle. Franchise. ये लिखना पड़ेगा. Because it is very important thing. Franchise is my verb to clear an obstacle. To clear an obstacle. अब बोलोगे franchise. ये हमें इस प्रॉब्लम को हटा देना चाहिए. To clear an obstacle. रुकावटें. Franchise. To clear the रुकावटें. Proceed. franchise, Groceed is my verb to gaining the weight. हमने बोला था proceed, अनूप जी, हमने बोला था say learn that the grossier sur le monde. Yes, sir. Say learn that the grow dossier grow. Grows we can use in the heavy problem also to gain weight. Proceed. So proceed to gain because weight, the moment you have these type of verbs and the vocab, then only you can make the sentence now. मैं हैरान हो गया. Eturdir. Franchir is to clear cut obstacle. etordir, franchise, Franchir. C'est clair. franchise, C'est clair. franchise, So use grossir, this. Grossir. Gerir. Very important. If we grossir, have a ague, gerir. Gerir is my verb to cure, to heal karna. Very gerir, important vocabulary. Gerir. Usually we have to heal the process, to cure the process. Gerir. C'est clair. gerir, gerir, Investir. अनूप जी समझ आ रहा है आपको? investir, Yes, sir. तो ये यूज करना है अब आपको. Because अब कहाँ पे लैंग्वेज स्टक हो रही है, यहाँ पे vocab नहीं है. Now I'm giving the vocabularies in terms of verbs. Verbs Correct. अब vocabularies. vocab की मुझे लगती है सर. Mm-hmm. सर आप एक बार वो सभी इररेगुलर वर्ब्स की लिस्ट भी देंगे सर एक बार. I will give it to you irregular verbs. जैसे अभी देते हैं आपको मैं. Investir. Investir is my verb to invest. Investir. investir, Magrir. देख पे आप मुआ. Magrir. magrir, You know, magrir is my verb to get thin. ये बहुत ही lean, to lose weight, to get. But यहाँ पे magrir you can use in a sujet also. Magrir. Magrir is to get thin. Now rep पे आपने मुआ से look magrir, पे. Speak up. Abolir. Speak up. Abolir. abolir, Accomplir. accomplir, Agir. agir, Agrandir. agrandir, Avertir. avertir, avertir, Batir. batir, Benir. batir, Benir. benir, Blanchir. blanchir, blanchir, Choisir. choisir, choisir, Convertir. Repete après moi. Convertir. convertir, convertir, Definir. क्या होता है अनूप definir, जी एंड आरवी, जब आप लिसनिंग करते हो ना, तो they use lot of things. Definite, convertir, eturdir, finir, magrir, nurir. So the moment you have these vocabulary, then only you can understand your listening. And now you have to practice for this. Gerir. What is gerir? It's a verb to cure karna, healing karna. Gerir, proceed, investir, franchir. Franchir to clear cut the obstacles. Franchir. franchir, franchir, C'est clair. Nourrir. clair, Nourrir. Nourrir is to feed and to nourish. To nourish. nourrir, Yes. nourish, nourrir, C'est clair. अभी मैं आपसे एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, अभी सेशन के दौरान ही. वो वीडियो आप अगर उसका प्रैक्टिस करना है, बिकॉज वो अभी मेरा लास्ट सेशन का वीडियो था जो मॉर्निंग में सेशन हुआ था 6 o'clock. उस सेशन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आपको समझ आएगा वो वीडियो. उस वीडियो Okay, में sir. आपको एक पूरा सूजे बताएगा कि सूजे बना कैसे ले हो आप.
From top to last. Say clair. Now punir. clair है. Punir is my verb to punish. Punir. Obeir. Repte apremua. Obeir. Obeir. Obeir is my verb to obey. We have to respect Obeir. the regular. If I will say we have to respect the regular, that is to obey le regular. Obey. No, obeisi, Back. obeison. Now obeir. Obeis. Okay. All right. Now make obeir verb conjugation. Obeir Obey. conjugation. So how will you do? Je obey. Very good. Are we very good? So we can say because we have ironing verb. Okay. So बनाओ एक बार try करो क्या बनाओगे? तो your Je be, obey. your To be. obey. Okay, I will Je explain to obey. you. Because we have is ending, your be. Respect Je the obey. regular. Is to To obey. To obey. obey. Yes. Il Il, elle, obey. 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 Nous Obey. obéissons. Nous Obéissons. nous Aïe. obéissons. Nous Nous obéissons. obéissons. Nous obéissons. Vous Nous, obéissez. vous nous obéissez. Vous obéissez. Il, elle, B, C. Il, elle. Il, elle, obéissent. 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 Il, elle, obéissent. J'obéis, tu obéis, il, elle obéit, nous obéissons, vous obéissez, ils, elles obéissent. C'est clair. Il, elles obéissent. C'est clair. Is it clear? Clair, to you? sir. Okay. Clair. Now repeat after me. Réfléchir. I use a lot of time the verb réfléchir. Réfléchir. To reflect and to think over. If you ever argue, Réfléchir. réfléchir. I use a lot of time that verb. Réfléchir. Réfléchir. Now, Réfléchir. because you have to do practice for these verbs. Remplir is my verb to fill up. To fill. Réfléchir. Réussir. Réussir is my verb Réussir. to success. To success. Réussir. Réussir. Rougir. 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 Okay. Rougir is my verb to blush. Rougir is my verb blush. to Blush. करना. Declare. Rougir. To turn red. Saisir. Very important verb. Is Saisir. to, yes, saisir. Saisir. Stop कर देना किसी को. Saisir. 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 Weir. Speak up. Weir. Weir. Repte आपने weir. Weir. You know आप बोलते हो कि ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम बन चुकी है. Weir is to grow old. Grow old. We. Now repte आपने मुंह से लूप ले. Abolir. Abolir. Accomplir. Accomplir. Agir. Repte आपने मुंह. Tongue. आपकी जो tongue है ना, your tongue has to be used to with these type of verbs. Agir. Speak up. Abolir. Now you Abolir. repeat. Be aggressive in your oral. Si vous voulez enrichir votre langue française, vous voulez ajouter quelques mots nouveaux, vous devez apprendre. C'est clair. Vous devez apprendre. C'est le même mot. C'est clair. Clair, sir. Now repeat it, please. Abolir.
abolir, accomplir, Agir. agir, Abolir is to abolish. Accomplir. abolir is to accomplir, Agir agir is to act. is to act, agir, Agrandir. agrandir, arrondir, Agrandir. Avertir. avertir, avertir, Okay. Okay. Then we have batir is to build. Batir. bater, Benir. bater, Benir is to bless. benir, benir benir, is to bless, Blanchir is to lighten, to whiten. Blanchir. blanchir is to lighten, to blanchir, whiten, Okay. Choisir is to choose. choisir is to choose, choisir is to choose, Convertir is to convert. convertir is to convertir convert, is to convert, Definir is to define. definir is to definir define, is to define, Établir. établir, établir, Étourdir. étourdir, Finir étourdir, is to finir, finir. Franchir. finir, Count. franchir, Franchir. franchir, Grossir. grossir, You ready for them? Grossir. grossir, Guérir. querir, Investir. investir, investir, Maigrir. macrir, Nourrir. nourrir, Punir. punir, Obéir. obéir, Réfléchir. réfléchir, réfléchir, Remplir. remplir, remplir, Réussir. réussir, réussir, Rougir. rougir, rougir, Saisir. désir, Saisir. sazir, Ouïr. saisir, Ouïr. désir, Ouïr. dire, désir, Is désir, to désir. grow old. C'est clair. C'est clair. clair, Yes, sir. Now we have some irregular verbs of ironing verbs, right? Wherein we do not have the formula. Now, repte apre moi still play Anup ji. अब मैं आपको ironing verbs की irregular verbs दे रहा हूँ. क्या होती हैं आरवी irregular verbs? जैसे ये तो हम फॉर्मूला पे कर रहे हैं IS, ISIT, ISSONS, ISSEZ and ISSENT. But some verbs we do not have formula. These are the ironing verb, but we will not have a formula. Right? Right, sir. That verb is irregular verb only for ironing verb. Dormir. Repte après moi. In dormir verb, we will not use these formula. We have a irregular verb. It's something like the verb we have a formula which is regular verb. The verb we do not have formula which is irregular verb. Simple. C'est clair. So dormir is a verb to sleep. Mentir. Repte Dormir. après moi. Mentir is to lie down. To lie, sorry. To lie. झूठा. ये वाला lie है. Mentir. झूठा. Mentir. Mentir. Okay. Partir. Mentir. Yes. You are montus. Partir. You are झूठा. You are montus. You are montus. Montos. Okay. Montos. So partir. Partir is my verb to leave. Partir. To Partir leave. is my verb to leave. Leave. C'est clair. Partir. Sortir. Dormir. लिखो सुपेंड डाउन sortir. 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 Yes. You are a menteur. C'est clair. You are a liar. So sortir. Sortir is my verb to leave. C'est clair. Sortir. Sentir. Sentir is a verb to feel. Sentir is a verb to feel. Servir. Sentir. Servir is a verb to serve करना. To serve. देखो ये vocabularies हैं which is very important. Mentir झूठा, dormir sleep, partir live, sentir is to feel. Servir. Servir is to serve and sortir is to go out. Now I will explain to you
What is the, if you will say, okay, if the dormir is my irregular verb, so tell me dormir, the conjugation of dormir verb then. तो आप क्या बोलोगे dormir verb को, right? Because these are the irregular verbs. So how will conjugate this dormir verb? बोलो j'adore, pick up. ये दो j'adore, j'adore is to I sleep. बिल्कुल ही चेंज है. dormir, j'adore, tu dors, j'adore, tu dors, I sleep, you sleep, elle dort, elle dort, c'est clair. Nous dormons, nous nous dormons, dormons, vous dormez, vous dormez, and elle dorment. elle dorme. C'est clair. Is it clear to you? Je dors, tu dors, elle dort, nous dormons, Very vous good. dors, vous dormez, And elle elle dort, dorme, dormo, dorme, dorme. C'est clair. dorme. Now we have verb partir. We have verb partir भी देखो Partir. इसके साथ ही conjugate होती है, कुछ इस टाइप से conjugate होती है हमारी partir. Clair? Partir. So we have Partir. je pars, very important. Simple है. Je pars, वहाँ पे दौर है तो PARS. Tu pars, je pars, PARS. tu pars, Elle part, PART. Say clair, Anup ji, is it clear to you? Yes, sir. So these are the irregular verbs. Nu parto. ये यूज करना है प्लीज, इसको प्रैक्टिस करना है, इसको यूज करना है. वो parte and il part. Say clair. Clear, sir. Okay. 1 second. Je pars. Okay, now, so, then we have, now for example, if I will say the past tense, Anup ji, Yes, sir. if I will say the past tense of participle verb, now, are we very good to understand? Because we are doing the verbs also, participle verb to leave. ध्यान रखना, Partir. पार्थिव जो मेरा एथ कॉन्जुगेशन, पार्थिव जो मेरा है वो मेरा एथ वर्ब है, एथ फैमिली का वर्ब है. तो हमने किया था आज भी कल, एथ का चलेगा प्रेजेंट टेंस, क्या चलेगा एथ का प्रेजो, Maison, प्रेजो प्रेजेंट टेंस, प्रेजो प्रेजो प्रेजेंट टेंस प्लस raison, पास्ट टेंस ऑफ द nous वर्ब, vont. प्रेजो प्रेजेंट टेंस, प्रेजो वी कॉल इट प्रेजो. सो पास्ट टेंस क्या है पार्थी का, पार्थी. पेपे क्या Parti. है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट होता है ना लेफ्ट, दैट लेफ्ट इज योर पार्थी. एथ का प्रेजेंट Parti. चलेगा, आई लेफ्ट क्या हो जाएगा, je suis, बिकॉज़ एथ का प्रेजेंट टेंस प्लस पेपे, je suis parti. ये क्लियर Je है? suis parti. Clear, sir. यू लेफ्ट क्या हो जाएगा, tu es parti. से क्लियर अनूप जी? Tu es Yes, sir. parti. ठीक है, बोलते हैं ना he left for the day, he left for the day. मान लो आप, मैं फोन करूं आपको बैंक में और आप बोलो नो नो he left for the day, वो निकल चुका है, तो il est parti, il est parti. Parti. आप बोलोगे il est parti, he left. से क्लियर? Clear, sir. nous sommes partis. यहाँ Nous पे आप sommes एस लगाओगे, partis. क्यों लगाओगे अनूप जी एंड आरवी? बिकॉज आपकी खाली एथ वर्ब में ही चीजें लगती हैं, व्हिच वी कॉल एज अकॉर्ड. क्लियर? जब नु बहुत सारे होते हैं तो जो आपका पेपे होता है ना, नु हम होते हैं ना हम, तो प्लूरल के साथ आपका एस लगेगा. ओनली इन केस ऑफ एथ, नॉट इन आवर वर्ब, ओनली विद एथ वर्ब. से क्लियर? Only with Clear. ether. जो वर्ब मेरी एथ वर्ब फैमिली में है, ओनली विद दिस,
we have to apply plural and feminine also. Clear? अब नूसोम पार्थी भी लेफ्ट, बहुत सारे लोग लेफ्ट करे होंगे, नूसोम बहुत सारे, तो एस लग जाएगा. Nuso. Clear? Nuso Parthi. That पार्थी, Nuso Parth. With Parth. that पार्थी. ओके, Who's Parthi? एक चीज देखना, अब देखो यहाँ पे क्या है, आरवी इल सो पार्थी, पार्थी के Il son बहुत सारे, Parthi. वो दे लेफ्ट तो आई से. क्लियर? अब लड़कियां जा रही हैं, Class. तो लड़की के साथ हम ई लगाते हैं एंड में. अब जैसे मैं Yes. बोलता हूँ कि शी लेफ्ट, मैं बोलूंगा एल ए पार्थी, ई लग जाएगा पार्थी, Parthi. Parthi. ई लगेगा Two लड़की के लिए, Parthi. ई लगेगा लड़की के लिए, हमेशा लड़की के लिए ई लगता है. ठीक है? और पर अगर इसमें यू के साथ भी एस लगना चाहिए था फिर तो. क्या कह रहे हो? इसमें वो के साथ भी एस लगना चाहिए था. हाँ, अगर आप बहुत सारे की बात करें तो ऐसा लग सकता है. अगर वो दैट पार्थी, यू ऑल आर लेफ्ट राइट, एंड देन एल, एल सो पार्थी, एल शी लेफ्ट, बहुत सारी लड़कियां लेफ्ट कर रही हैं, तो लास्ट में ई एस लगे, फॉर अ गर्ल ई एंड फॉर एस इज अ प्लूरल. क्लियर? Class. इसका पूरा प्रैक्टिस करना आपको. सर इसमें जैसे इसमें एत्र वर्ब है तो इसके साथ में एस प्लूरल भी लगेगा और फेमिनिन भी लगेगा. फेमिनिन में लगेगा ई, एत्र वर्ब में अगर फीमेल है तो लगेगा ई, फीमेल प्लूरियल है, फीमेल प्लूरियल, तो लगेगा यस, क्योंकि एक तो ई लग गया फीमेल का और प्लूरल होगा एस का. एस लग गया उसको. ठीक. और सर वो प्लूरल पी सर वो पीपी क्या है मतलब प्रेजेंट तो एत्र का पेपे, प्रेजेंट आ गया. पेपे का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल, यू नो, पार्टिसिपल से, पास्ट ओके. पार्टिसिपल, पास्ट पास्ट वर्ब. पास्ट, पास्ट पास्ट, हाँ वर्ब. पास्ट लगो, जैसे टॉक टॉक टॉक्ड, तो वो पास्ट, लीव लेफ्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल से. क्लियर? क्लैश सर. ठीक है? अब मैं ना आपको, सर हाँ हाँ बताओ बताओ. जैसे कि आपने कल किया था ना एत्र जिसके एत्र उसके साथ वॉज था. इसमें जैसे कि तुम लिखते थे टू ई टी ए आई एस. हाँ, वो पता है क्या था, ये तो हो गया लेफ्ट. ठीक है? वो होता है यस हमारा, सर. वो हमारा होता है कि वॉज, लिटरली वॉज क्या है मेरा, लिटरली वॉज. जैसे ओके वॉज. इज एम आर बताओ, लेट्स हैव अ डिफरेंशिएट बिटवीन इज एम आर and was were. चलो, very good. Today let's have a differentiate between was were, Claire, क्लैश and सर. is mr. ये ध्यान रखना है आपको. Claire, मेरा क्लैश सर. is mr क्या है? Tell me. is mr क्या है मेरा? अनूप जी, what is is mr? We use it for present tense हाँ, for एत्र, to indicate the present tense. एत्र का is mr, yes. एत्र का is mr Yes. क्या है बताओ? Yes, we Q A L A. Nous Je sommes, suis tu Song es, who's that? L tu song. es, il est, nous sommes, vous êtes, ils elles sont. Clear हुआ आदमी? इलेल्सों राइट सर. अब जो was were भी तो एत्र से ही निकलेगा ना हमारा, है ना? ऐसे तो मेरी एक पूरी राइट वर्ब सर. है इसे मार की टू बी, तो वॉज वर, जो ओके. वॉज वर मेरा होगा फ्रेंच में होगा जेते, जेते. ए आई एस लगेगा चू इनमें. ई के ऊपर जेते. एक्यू लगा लेना, ई के ऊपर ई एक्यू है, ए वाला चूते, ई के ऊपर ना जो चूएते. साउंड होता है ना, ए वाला साउंड जो लगता है, ए वाला. राइट सर. ठीक है? जेते, चूते, एल एल एते. से क्लियर? समझ आ रहा है आपको? क्लैश. वी वर क्या होगा? नू जेतियों. यू वर क्या होगा? वू जेतिए. vous étiez. एंड इल il एल देते हैं. c'était. तो बेसिकली क्या है फॉर्मूला हमारा है ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, ai आई ओ एन एस, आई ions जेड एंड ए iz आई ई एन टी. से क्लास. aient.
Say clear, RV. clear sir. Okay. Now let's go for a translation. Okay. अब एक translate करो आप. लिखो आप please. Pen down please. Pen down please. Right sir. I come to this place. Pen down please. I come to I come to this place, but I want to leave that place. बनाओ इसको आप. Nobody. Yes, sir. What is my English? Tell me. I want. क्या है? I come to this place, but I want What to is leave I that come? place. So we have verb one need. One need is my verb to is my verb to come. Are we? One need. One need is my verb to come. je venir. Je Je viens. viens. Je viens. Je Je viens. viens. Tu viens. These are the irregular verb. आप पूछो ना मेरे से irregular verb बनोगी. So these are the entire irregular verbs. Je viens. Tu viens. ये ironic verb का मैं बता रहा हूँ आपको. Elle vient. Elle vient. Nous venons. Nous venons. Vous venez. Elle Elles viennent. vient. Now repeat it, please. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, elles viennent. C'est clair. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, elle viennent. 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 Now Elle speak viennent. after me. These are the irregular verbs. Bolo. Aller. Bolo. Aller. Aller. Aller is my Aller. verb to go. Very important. These are the very important verbs. Avoir. Anup ji. Irregular Yes, sir. verbs हैं सारी. Avoir is my verb to have. Repeat it, please. Avoir. Croire is my verb Avoir. to believe. अभी हम सभी Avoir. conjugate करेंगे. Devoir is my verb to have. To have. Devoir. Must. Avoir is to Have to to. have. Must. Have Have to. to. Must. Dire is my verb to say. Dire. To tell. To say and to tell. Faire is my verb to do. These are the entire Faire. irregular verbs. Falloir, again, to must. Falloir. Obligation. Manquer is my verb to miss. Manquer. Okay. Pouvoir is my verb to can. Pouvoir. Tenir is my verb to hold. Venir. Tenir, tenir. Tenir. Tenir is my verb to hold. Vivre is my verb to live. Vivre is to live. Live. Voir is my verb to see. Vouloir is my verb to want. Vouloir. Vouloir. Very clear. So Clear, aller sir. is to go, avoir is to have, croire is to believe, devoir is to must. Répétez après moi s'il vous plaît. Repeat it please. And être is my verb to Être. be. To be. And savoir is my verb to know. Irregular verb. Savoir. To know. Now repeat it please, Anupji and Arvi. Repeat it please. Aller is to go, avoir is to have, voir is to Voir. devoir is to must, dire is to tell, faire is to do, falloir क्या बोलेंगे फिर से? Falloir. 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 Mm-hmm. Falloir. Mm-hmm. Falloir. Okay. Pouvoir. Mm-hmm. Tenir. Mm-hmm. Vivre. Vivre.
vivre, Yes, voir, vivre. C'est vivre, clair. clair sir. देखो अब देखो croire is my verb to believe है. Croire. If you say I believe that, you believe that. What is the conjugation of croire verb? बोलो je crois. ये क्या प्रेम Je, है? Je je crois. crois, je Vous crois, croire. C'est clair. vous crois, Elle croit. C'est clair. elle croit, Is it clear to you? Nous croyons. We believe. nous, ये nous practice croyons, करना है. You have to do practice. Vous croyez. vous croyez, C'est clair. And elle croit. elle croit, Je crois, tu crois, elle croit, nous croyons, vous croyez, il croit. C'est clair. elle croit, C'est clair, Anup ji. clair sir. Now fair verb. We have done a lot of time that fair verb. Irregular Fair. verb. What will say? Je fais. Faire, je Je fais, fais. tu fais, Very good. Tu fais, F-A-I-S. elle fait. elle fait, nous faisons. nous faisons, vous faisiez, Vous faites. vous ऐसे faites, होगा. we said. नहीं ये थोड़ा सा अलग है वो के साथ es आएगा इसमें fair verb में Vous faites, faites and elles font ils font. थोड़ा सा अलग verb है तो je fais tu fais Je elles fait fais, nous faisons elles, vous nous faites faisons, vous faites, ils elles font. clair now Clair sir. अब मैं आपसे एक लिंक और शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मीटिंग अभी अबाउट टू एंड है 1 मिनट रह गया है सो आई एम गोइंग टू शेयर नेक्स्ट मीटिंग और उसमें आपको मैं एक चीज बताऊंगा जो आपको करनी है अभी क्लियर Clair.